हेलो गाइस, वेलकम बैक द अनदर न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी तालाबाद से कॉल आया था और मैसेज तो पहले आ गया था कि आपको मैच देखने जाना है, क्योंकि 30 राइडर को तालाबाद टिकट दिया था। आज मैच है कतर और अफगानिस्तान का फुटबॉल मैच है। 30 राइडर को सिलेक्ट किया तो मैसेज तो पहले आ गया था कि आप सिलेक्टेड हो, मगर जाने का उतना मूड भी नहीं हो रहा था। बाद में तालाबाद डायरेक्ट कॉल किया कि अगर आप जाना चाहते हो तो आपका शिफ्ट है जो ब्रेक लगाएंगे। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं चला जाए। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ मैच देखने और 6:45 से स्टार्ट है मैच, मगर अभी जो 6 बजा है 2 डिलीवरी मैं कंप्लीट करूँगा। उसके बाद वहाँ पे जो तालाबाद का पेट्रोलियम है उधर वेट कर रहा है 28 गेट पे टिकट देने के लिए। तो ये डिलीवर करते ही खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच आज होने वाला है 6:45 में। तो मैं दोस्तों अभी डिलीवर करके तुरंत निकलूँगा और आज का मैच को ना एंजॉय करूँगा। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste. तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ गेम देखने के लिए कतार और अफ़गानिस्तान का, और सिक्योरिटी चेकअप भी हो चुका है। और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं स्टेडियम के अंदर, और उसके बाद आज एंजॉय करना है और आपको भी दिखाऊंगा और मैं खुद भी देखूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो के एंड में।
scored by player number 7, Delevry. तो दोस्तों मैच देख के मैं अभी आ रहा हूँ और मैच में कुछ उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि जो टक्कर का गेम होता है ना, जो बराबरी का, वो नहीं था। अब कतार ने 8 गोल मारा, अफ़गानिस्तान ने सिर्फ 1 गोल मारा। और वैसे भी कतार अब वर्ल्ड कप भी खेल चुका है, उसके पास थोड़ा बहुत अनुभव है, तो बराबर का गेम नहीं हुआ। उतना जितना अच्छा एंजॉय होना चाहिए उतना नहीं हुआ, फिर भी अच्छा था खेला है। स्टेडियम भी बहुत अच्छा था। मैं फर्स्ट बार इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर गया था, तो आई फीलिंग बेटर और इन्जॉय हुआ। बाकी ऐसा ही है। और दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, क्योंकि आप हमारे लिए बेहद बेहद ज़रूरी हो। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।